Honorable Minister for Public Works, Mr. A.V. Velu, all Honorable State Ministers, MPs, MLAs who are present at the other 11 new medical colleges and other dignitaries, doctors and staff. Today, 11 new medical colleges are being inaugurated in Tamil Nadu. In the district, Virudhunagar, Kalakuruchi, Ariyalur, Nilgiri, Krishnagiri, Nagapattanam, Dindigul, Tirupur, Tiruvallur, Ramnathpuram and Namakkal. It is the vision of Honorable Prime Minister to promote affordable medical education and to improve health infrastructure in all parts of country. And today, this vision is being translated in Tamil Nadu too. This new medical college are built at cost of rupees 325 crores each. These colleges have added another 1,450 medical seats for the state of Tamil Nadu. I would like to mention here that Tamil Nadu has the largest number of medical colleges in the country. The healthcare sector of India has seen unprecedented growth in the last 7.5 years under the strong leadership of the Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji. Historic steps have taken to ensure affordable, accessible and qualitative healthcare for all. When country faces unprecedented challenge of COVID-19, Modi government comes up with 2 emergency COVID response packages. The central government sanctioned rupees 712 crores under ECRP 1 and rupees 798 crores under ECRP package 2 to the state of Tamil Nadu. I must appreciate the efforts of the state government for taking the initiative of set up 11 additional medical colleges that to within record timeline. Before 2014, it took years to establish medical college, but under the leadership of Prime Minister Sri Narendra Modi ji, medical colleges are opening with faster speed with the collaborative efforts of center and state governments. Tamil Nadu has worked proactively to get 11 medical colleges approved under the centrally sponsored scheme at cost of 3,575 crores. The complete central share of rupees 2,145 crores was released and the state government of Tamil Nadu has also ensured the release of state share, enabling the speedy establishment of these medical colleges, which are being made functional today. Besides offering subsidized medical education, these institutions will also help in providing tertiary care to the rural, unserved and underserved areas. Today, along with 11 medical colleges, Honorable Prime Minister is going to inaugurate the new campus of Central Institute of Classical Tamil for promoting classical Tamil across the world. Under the leadership of the Honorable Prime Minister, we are committed towards making Swasth Bharat, which means a healthy India, Sashakt Bharat, which means empowered India, and Samriddh Bharat, which translates to prosperous India. Once again, I welcome Honorable Prime Minister, Honorable Governor, Honorable Chief Ministers, other dignitaries on this auspicious occasion. Jai Hind. Thank you, sir.
மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் இப்போது உரையாற்றுவார்கள். We invite Honorable Chief Minister of Tamil Nadu to deliver his address. மாண்புமிகு பிரதமர் அவர்களே, மாண்புமிகு ஒன்றிய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் அவர்களே, ஒன்றிய துணை அமைச்சர் பெருமக்களே, தமிழகத்தினுடைய ஆளுநர் அவர்களே, தமிழ்நாடு அரசினுடைய மாண்புமிகு அமைச்சர் பெருமக்களே, நாடாளுமன்ற சட்டமன்ற உறுப்பினர்களே, ஒன்றிய மாநில அரசுகளுடைய உயர் அதிகாரிகளே, அலுவலர்களே, மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர்களே, மருத்துவர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பான மாலை வணக்கம். தமிழ்நாட்டில் ஆட்சி மாற்றம் நடந்த பிறகு மாண்புமிகு பிரதமர் அவர்கள் கலந்து கொள்ளக்கூடிய முதல் அரசு விழா என்பதால் மாண்புமிகு பிரதமர் அவர்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசின் சார்பில் வாழ்த்துக்களையும் நன்றியையும் நான் தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன். தனது பல்வேறு பணிகளுக்கிடையே தமிழ்நாட்டு மக்களுடைய குறிப்பாக மாணவர்களின் நலனை மனதில் கொண்டு இந்த சிறப்பான நிகழ்ச்சிக்கு தங்களுடைய நேரத்தை ஒதுக்கி தந்தமைக்காக பிரதமர் அவர்களுக்கு நான் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன். தமிழ்நாட்டின் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் மருத்துவக் கல்லூரி அமைய வேண்டும் என்பது முத்தமிழறிஞர் தலைவர் கலைஞர் அவர்களுடைய கனவாகும். 2006ஆம் ஆண்டு சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு முன்னால் திமுகவினுடைய தேர்தல் அறிக்கையை தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் வெளியிட்டார்கள். அதில் கல்வி என்ற துணை தலைப்பில் ஒரு குறிக்கோளை அறிவித்தார்கள். மாவட்டத்திற்கு ஒரு மருத்துவக் கல்லூரி என்ற குறிக்கோளை நடைமுறைப்படுத்துவோம் என்று அறிவிக்கப்பட்டது. 2006ஆம் ஆண்டு திமுக ஆட்சி காலத்தில் பின்தங்கிய மாவட்டங்கள்ல மருத்துவக் கல்லூரி அமைக்க திட்டமிடல்களை செய்திருக்கிறோம். அனைத்து மாவட்டங்களிலும் மருத்துவக் கல்லூரி என்ற முத்தமிழறிஞர் கலைஞரின் கனவுதான் இன்றைய நாள் நிறைவேறி இருக்கிறது. இன்று நமது நாட்டிலேயே அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகளில் மிக அதிக எம்பிபிஎஸ் இடங்களையும் மருத்துவ மேற்படிப்பு இடங்களையும் கொண்டு மருத்துவத்துறையில தமிழ்நாட்டிற்கு நமது நாட்டிற்கே இந்த தமிழ்நாடு முன்னோடி மாநிலமாக விளங்கி கொண்டிருக்கிறது. இதற்கான அனுமதியும் ஒத்துழைப்பையும் நிதி ஒதுக்கீடையும் வழங்கி வரக்கூடிய ஒன்றிய அரசுக்கும் குறிப்பாக இந்திய பிரதமர் அவர்களுக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றியை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். தமிழ்நாடு அரசின் இத்தகைய முயற்சிகளுக்கு ஒன்றிய அரசு அளித்துள்ள ஆதரவிற்கு நன்றி கூறக்கூடிய அதே நேரத்தில் புதிதாக உருவாக்கப்பட்டுள்ள மாவட்டங்களிலும் புதிய மருத்துவக் கல்லூரி அமைப்பதற்கு மாநில அரசிற்கு தங்களது அரசு தொடர்ந்து உதவியளிக்க வேண்டும் என்றும் நான் இந்த நேரத்தில் கேட்டுக்கொள்ள விரும்புகிறேன். மருத்துவ கட்டமைப்பு வசதிகள் மட்டுமின்றி மக்களுக்கு பயன் தரும் மருத்துவ திட்டங்களை செயல்படுத்துவதிலும் தமிழ்நாடு அரசு குறிப்பாக திராவிட முன்னேற்ற கழக அரசுக்கு நாட்டிற்கே ஒரு முன்னுதாரணமாக திகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது. கண்ணொளி திட்டம், முதலமைச்சரின் மருத்துவ காப்பீட்டு திட்டம், மருத்துவர் முத்துலட்சுமி ரெட்டி மகப்பேறு உதவி திட்டம், வருமுன் காப்போம் திட்டம், மக்களை தேடி மருத்துவம், நம்மை காக்கும் 48 என தமிழ்நாடு அரசின் திட்டங்கள் பலவற்றை என்னால் குறிப்பிட்டு சொல்ல முடியும். இவ்வாறு புதுமையான திட்டங்களை தீட்டி சிறப்புற செயல்படுத்தும் தமிழ்நாடு அரசின் மருத்துவத்துறைக்கு ஒன்றிய அரசின் நிதி ஒதுக்கீடுகள் மேலும் உயர்த்தப்பட வேண்டும் என்றும் இந்த நேரத்தில் நான் கேட்டுக்கொள்ள விரும்புகிறேன். பல மாநிலங்களில் மருத்துவர்களின் பற்றாக்குறை நிலவி வரக்கூடிய இந்த சூழலில் தமிழ்நாட்டில் மருத்துவம் பயிலும் மாணவர்கள் கிராமப்புறங்களிலும் அரசு துறைகளிலும் சிறப்பாக சேவை செய்வதற்கு தமிழ்நாடு அரசின் மாணவர் சேர்க்கை கொள்கையே அடிப்படையாகும். எங்களது கொள்கை இந்த வாய்ப்புகளை தமிழ்நாட்டில் உள்ள கிராமப்புற ஏழை எளிய மாணவர்களுக்கு கிடைக்க செய்வது. தமிழ்நாட்டின் மருத்துவத்துறையின் வெற்றியும் இந்த கொள்கையின் விளைவே. இந்த அடிப்படை கொள்கை பாதிக்கப்பட்டு விடக்கூடாது என்பதற்காகத்தான் நீட் தேர்விலிருந்து தமிழ்நாட்டுக்கு விதிவிலக்கு அளிக்க வேண்டும் என்று தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகிறோம். எனவே மனிதவள ஆற்றலின் அடித்தளமாக அமைந்துள்ள மாணவர் சேர்க்கை முறை தொடர்பான தமிழ்நாடு அரசின் கோரிக்கையை ஒன்றிய அரசு நிறைவேற்றி தர வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். Honorable Prime Minister, the admission policy of Tamil Nadu plays a very important role in our health infrastructure. It is to protect this we have been continuously demanding
need exemption for Tamil Nadu. I appeal Union Government to consider our request favorably. இந்த நாளில் மாண்புமிகு இந்திய பிரதமர் அவர்கள் செம்மொழி தமிழாய்வு நிறுவனத்தின் புதிய கட்டடத்தை திறந்து வைக்க இருக்கிறார்கள். அதற்காக தமிழ்நாட்டு மக்களின் சார்பிலும் அரசின் சார்பிலும் தனிப்பட்ட என் சார்பிலும் நன்றியை தெரிவித்துக்கிறேன். முத்தமிழர் கலைஞர் அவர்கள் இன்று இருந்திருந்தால் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைந்திருப்பார்கள். தமிழர்களை நூற்றாண்டு கனமான செம்மொழி தகுதியை 2004 ஆண்டு பெற்று தந்தவர் கலைஞர் அவர்கள். அவரது முயற்சியால் உருவாக்கப்பட்ட நிறுவனம் தான் இந்த செம்மொழி தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனம். அந்த நிறுவனத்துக்கு 24 கோடி 65 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் புதிய கட்டடம் அமைத்து தந்த ஒன்றிய அரசுக்கும் மாண்புமிகு பிரதமர் அவர்களுக்கும் நான் நன்றியை தெரிவிக்க விரும்புகிறேன். தமிழர் திருநாளாம் பொங்கல் திருநாளின் போது தமிழுக்கு இத்தகைய சிறப்பு செய்யப்பட்டுள்ளது மகிழ்ச்சிக்குரியதாக இருக்கிறது. தமிழுக்கு சிறப்பு செய்யும் செம்மொழி நிறுவனத்தின் கட்டடத்தையும் தமிழ்நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு அடித்தளம் அமைக்கும் மருத்துவக் கல்லூரிகளையும் திறந்து வைக்கக்கூடிய மாண்புமிகு பிரதமர் அவர்களுக்கு மீண்டும் ஒரு முறை நன்றி கூறி தமிழர் திருநாளாம் பொங்கல் திருநாள் வாழ்த்துக்களை மாண்புமிகு பிரதமர் அவர்களுக்கும் அனைவருக்கும் தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். மிக்க நன்றி ஐயா. இப்போது மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் அவர்கள் தமிழ்நாட்டில் உருவாக்கப்பட்டுள்ள 11 புதிய அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகளை தொடங்கி வைப்பார்கள். Now we request Honorable Prime Minister to inaugurate 11 new government medical colleges in Tamil Nadu by pressing the remote, followed by screening of short film. Tamil Nadu has a rich tradition of Siddha system of medicine. With a vision of healthcare for all, holistic steps have been taken under the decisive leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi in the last 7.5 years. As the world's largest healthcare scheme, Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana is ensuring quality and free treatment for the poor. Lakhs of health and wellness centers and thousands of Jan Aushadhi Kendras across the nation are promoting wellness and saving thousands of crores of rupees of the poor and the middle class. In India, in the last 7 years, there has been a 54% increase in medical college hospitals from 387 in 2013-14 to 596 in 2021-22. During this period, the number of MBBS seats has increased by 79% to 92,222 and the postgraduate seats have increased by 81% to 56,374. In Tamil Nadu, in the last 7 years, there has been an increase of 53% medical colleges from 45 in 2014 to 69 in 2021. During this period, the number of MBBS seats for the state increased by over 67% from 6,215 seats in 2014 to 10,375 seats in 2021. Similarly, the postgraduate seats witnessed 75% growth from 2,429 seats in 2014 to 4,255 seats in 2021, thereby ensuring healthcare services at grassroots level and better opportunities for our youth. In the healthcare sector, under the guidance of the Honorable Prime Minister, various healthcare schemes and services are furthering wellness for the people of Tamil Nadu. AIMS at Madurai is aimed at taking the brand AIMS to all corners of the country.
over rupees 3,000 crores support to Tamil Nadu under PM Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission is to be used for operationalization of 986 urban health and wellness centers and establishment of 38 district labs, 5 critical care blocks of 100 beds each and 32 critical care blocks of 50 beds each, creating a robust healthcare network for the people of Tamil Nadu. In the current financial year itself, over rupees 3,000 crore have been given to the state under National Health Mission. The state government, also under the leadership of Honorable Chief Minister, has been in the forefront of combating COVID in the state and also implementing many unique health initiatives with its own funds, and is in the forefront of implementing all the national initiatives with the support of the Government of India in a well-coordinated manner, reflecting in consistent improvement in health outcomes and aimed at exceeding the targets under the Sustainable Development Goals. Tamil Nadu also has a rich tradition of unique programs such as Dr. Muthulakshmi Reddy Maternity Benefit Scheme, Varumun Kappom Thittam, Makkalai Thedi Maruthuvam, among many unique initiatives along with multiple national health initiatives has helped Tamil Nadu to be a leader in healthcare. It is a historic day for Tamil Nadu as Honorable Prime Minister dedicates 11 medical colleges to the state and the nation. The new medical colleges are situated in Virudhunagar, Kallakurichi, Ariyalur, the Nilgiris, Krishnagiri, Nagapattinam, Dindikkal, Tirupur, Tiruvallur, Ramanathapuram and Namakkal. The medical colleges, established at an assistance of about rupees 2,145 crore from Government of India and contribution of rupees 1,935 crore by the state government, will improve tertiary healthcare services and serve about 1.5 crore population in these districts and adjoining areas. It will address the geographical imbalance in the distribution of medical colleges and ensure effective utilization of the existing infrastructure of district hospitals. The 11 medical colleges will add 1,450 new undergraduate medical seats. The medical colleges will immensely contribute towards improving the doctor population ratio. Over 11,000 healthcare professionals and others will get employment. With dedication of 11 new medical colleges, Tamil Nadu's leading position in terms of the number of medical colleges and medical seats gets further strengthened. மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் அவர்கள் செம்மொழி தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனத்தின் புதிய வளாகத்தை திறந்து வைப்பார்கள். Now we request Honorable Prime Minister to inaugurate new campus of Central Institute of Classical Tamil by pressing the remote, followed by screening of short film. Tamil is the oldest language in the world with rich literary traditions. Prime Minister Shri Narendra Modi has expressed pride in Tamil on various occasions. In Mann Ki Baat, he expressed his love for Tamil. मेरी एक कमी ये रही कि मैं दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा तमिल सीखने के लिए बहुत प्रयास नहीं कर पाया. मैं तमिल नहीं सीख पाया. यह एक ऐसी सुंदर भाषा है जो दुनिया भर में लोकप्रिय है. He also announced setting up of Subramanian Bharati Chair for Tamil Studies in Banaras Hindu University. तमिल भाषा समृद्ध भाषा है, विश्व की सबसे पुरातन भाषा है और हम सभी हिंदुस्तानियों के लिए गर्व की बात है. तमिल स्टडीज पर सुब्रमण्यम भारती चेयर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU के फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में स्थापित होगी. Prime Minister took Tamil to the world stage also by quoting it at the United Nations. Tamil was accorded the status of a classical language by the Government of India in 2004. Central Institute of Classical Tamil was established as an autonomous body under Ministry of Education to promote classical Tamil language across the world.
CICT has been engaged in research activities relating to the classical phase of the Tamil language, which is from the early periods to the late 600 AD. These researches established the ancientness and uniqueness of Tamil language and culture. The institute has also contributed to the archaeological excavations of Kodumanal and Porunai, the findings of which established the rich heritage of Tamil language. In line with Prime Minister Shri Narendra Modi's vision to promote India's culture and linguistic heritage, CICT is translating Thirukkural in all Indian languages and at least 100 foreign languages. The institute gives grants for short-term projects, holds seminars, workshops and training programs, grants doctoral and postdoctoral fellowships and supports MA Classical Tamil students. Presidential awards are also given to Tamil scholars every year. CICT has been working from a rented accommodation for over a decade now. In order to ensure efficient functioning of CICT, Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi is inaugurating its new building today. The new 3-storied building with its spacious library, multimedia halls and state-of-the-art infrastructure will now provide a proper working environment for the Tamil researchers. The library in the new building will house a rich collection of over 45,000 ancient Tamil books, including 4,800 rare books and 2,200 e-books. It will also have a separate section for the digital version of palm leaf manuscripts, inscriptions, styles and ancient texts relating to Sangam Classics era. Institutional repositories such as e-papers, publications, digital library website and other related documents will also find place in this library. Land for the new CICT building was made available by the Government of Tamil Nadu and construction has been done by Government of India. Built at a cost of rupees 24 crore, CICT with its modern infrastructure will now attract more youth to the studies of classical Tamil and extensive research activities and contribute significantly towards preserving and promoting India's glorious Tamil heritage. On behalf of people of Tamil Nadu, we thank Honorable Prime Minister for inaugurating these visionary projects. Now we cordially welcome Honorable Prime Minister to deliver his address. Governor of Tamil Nadu, Sri R.N. Ravi ji, Chief Minister of Tamil Nadu, Sri M.K. Stalin, Cabinet Minister Sri Mansukh Mandaviya ji, my colleague in the Council of Ministers, Sri L. Murugan, Bharti Pawar ji, Ministers of the Tamil Nadu government, Members of Parliament, Members of the Tamil Nadu Assembly, Sisters and Brothers of Tamil Nadu. Vanakkam. Let me begin by conveying Pongal and Makar Sankranti greetings to you all. As the famous song goes, Thai Pirandal Vai Pirakkum. Today, we are meeting for two special reasons. The inauguration of 11 medical colleges and the inauguration of the new building of the Central Institute of Classical Tamil. Thus, we are furthering the health of our society and making the connect with our culture stronger. Friends, medical education is one of the most desired streams for studies. The problem of
Shortage of doctors in India was well known. But there were not enough efforts to address this problem. Perhaps vested interests also did not let previous government to take the right decisions, and access to medical education remained an issue. Ever since we have taken office, our government has worked to address this gap. In 2014, our country had 387 medical colleges. In last 7 years only, this number has grown up to 596 medical colleges. This is an increase of 54%. In 2014, our country had around 82,000 medical undergraduate and postgraduate seats. In last 7 years, this number has gone up to around 1,48,000 seats. This is an increase of about 80%. In 2014, there were only 7 AIIMS in the country. But after 2014, the number of AIIMS approved has increased to 22. At the same time, various reforms have been undertaken to make the medical education sector more transparent. Regulations for setting up medical colleges and hospitals have been liberalized without compromise on quality. Friends, I am told that this would be the first time that 11 medical colleges are being inaugurated at one stock located in any one state. Just few days back, I had inaugurated 9 medical colleges at the same time in Uttar Pradesh. So, I am getting to break my own record. It is important to address regional imbalances. In the light, it is good to see 2 of the medical colleges inaugurated are in the aspirational districts of Ramanathapuram and Virudhunagar. These are districts where the development needs require special attention. One college in the remote hilly district of the Nilgiris. Friends, the once in a lifetime COVID-19 pandemic has reaffirmed the importance of the health sector. The future will belong to societies which invest in healthcare. The government of India has brought many reforms in the sector. Thanks to Ayushman Bharat, the poor have access to top quality and affordable healthcare. The cost of knee implants and stents have become 1/3 of what it was. PM Jan Aushadhi Yojana has brought about a revolution in access to affordable medicines. There are over 8,000 such stores in India. This scheme has particularly helped the poor and the middle class. The money spent on medicines has come down greatly.
To further healthy lifestyle among women, sanitary napkins are being provided at a cost of 1 rupee. I would urge the people of Tamil Nadu to take full advantage of these schemes. The Pradhan Mantri Ayushman Bharat Infrastructure Mission aims to address the critical gaps in health infrastructure and health research, especially at district level. A support of over rupees 3,000 crore would be provided to Tamil Nadu in the next 5 years. This will help in establishing urban health and wellness centers, district public health labs, and critical care blocks across the state. The benefits of this for the people of Tamil Nadu will be immense. Friends, in the coming year, I envision India as being to go to destination for quality and affordable care. India has everything needed to be a hub for medical tourism. I say this based on the skill of our doctors. I urge the medical fraternity to look at telemedicine as well. Today, the world has also taken note of Indian practices that further wellness. This includes yoga, Ayurveda, and Siddha. We are working to make this popular in a language the world understands. Friends, the new building of the Central Institute of Classical Tamil will make Tamil studies more popular. It will also give a wider canvas to students and researchers. I am told that the Central Institute of Classical Tamil intends to translate Tirukural in various Indian and foreign languages. This is a good step. I have always been fascinated by the richness of the Tamil language and culture. One of the happiest moments of my life was when I got a chance to speak a few words in the world's oldest language, Tamil, at United Nations. The Sangam classics are our window to the rich society and culture of the ancient times. Our government also had the honor to setting up Subramanya Bharati Chair on Tamil Studies at Banaras Hindu University. Located in my parliamentary constituency, this will drive greater curiosity about Tamil. When I launched a translation of Tirukural in Gujarati, I knew that the rich thoughts of this timeless work would connect with the people of Gujarat and drive greater interest in ancient Tamil literature. Friends, we have given great emphasis on promotion of Indian languages and Indian knowledge system in our National Education Policy 2020. Tamil can now be studied as a classical language in school education at the secondary level or middle level. Tamil is one of the languages in the Bhasha Sangam where school students get familiar with 100 sentences
in various Indian languages in audio videos. Largest e-content of Tamil has been digitized under the Bharatvani project. Friends, we are encouraging education in mother tongue and local languages at schools. Our government has also started making technical courses like engineering available to students in Indian languages. Tamil Nadu has produced many bright engineers. Many of them have become top global technology and business leaders. I call upon this talented Tamil diaspora to help develop Tamil language content in STEM courses. We are also developing an artificial intelligence-based language transition tool to translate English language online courses into 12 different Indian languages, including Tamil. Friends, India's diversity is our strength. Ek Bharat, Shresth Bharat seeks to enhance the spirit of unity in diversity and bring our people closer. When a young child in Haridwar sees a Tiruvalluvar statue and finds out about his greatness, a seed of Ek Bharat, Shresth Bharat is laid in a young mind. A similar spirit is seen when a child from Haryana visits to Rock Memorial at Kanyakumari. When children of Tamil Nadu or Kerala learn about Veer Bal Divas, they get connected with the life of message of the Sabjadas, the great sons of the soil who sacrificed their lives but never compromised on their ideals. Let us make effort to discover other cultures. I assure you that you will enjoy it. Friends, before I conclude, I would like to request you all to follow all COVID-19 related protocols, particularly mask discipline. India's vaccination drive is making remarkable progress. In the last few days, youngsters in the 15 to 18 category have begun to get their doses. The precaution doses for the elderly and healthcare workers have begun too. I urge all those who are eligible to get vaccinated, guided by the mantra of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas. All of us have to work together to bring a positive change in the lives of 135 crore Indians. Learning from the pandemic, we keep working to ensure inclusive and quality healthcare services to all our countrymen. We need to learn from our rich culture and build the foundation of Amrit Kal for the future generations to come. Best wishes once again to all on the occasion of Pongal. May it bring peace and prosperity to all of us. Vanakkam. Please, sir. पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर तमिल साई जी,
मुख्यमंत्री एन रंगासामी जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री नारायण राणे जी, श्री अनुराग ठाकुर जी, श्री निशित प्रामाणिक जी, श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा जी, पुडुचेरी सरकार के वरिष्ठ मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, देश के अन्य राज्यों के मंत्रीगण और मेरे युवा साथियों, वणक्कम। आप सभी को राष्ट्रीय युवा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत मां की महान संतान स्वामी विवेकानंद जी को उनकी जयंती पर मैं नमन करता हूं। आजादी के अमृत महोत्सव में उनकी जन्म जयंती और अधिक प्रेरणादायी हो गई है। ये वर्ष दो और वजह से भी विशेष हो गया है। हम इसी वर्ष श्री अरबिंदो की 150वीं जन्म जयंती मना रहे हैं और इस साल महाकवि सुब्रमण्यम भारती जी की भी 100वीं पुण्यतिथि है। इन दोनों मनीषियों का पुडुचेरी से खास रिश्ता रहा है। ये दोनों एक दूसरे की साहित्यिक और आध्यात्मिक यात्रा के साझीदार रहे हैं। So the National Youth Festival being held in Puducherry is dedicated to these great sons of Mother India. Friends, today in Puducherry, MSME Technology Center is inaugurated. The role of MSME sector is very, very important in creating आत्मनिर्भर भारत। बहुत जरूरी है कि हमारे एमएसएमई उस टेक्नोलॉजी का उपयोग करें जो आज दुनिया को बदल रही है। इसलिए देश में आज टेक्नोलॉजी सेंटर सिस्टम्स प्रोग्राम का एक बहुत बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। पुडुचेरी में बना एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। साथियों, आज पुडुचेरी के युवाओं को कामराज जी के नाम पर मणिमंडपम, एक प्रकार का सभागृह, मल्टीपर्पज यूज वाला, उसका एक और उपहार मिल रहा है। ये सभागृह कामराज जी के योगदान की याद तो दिलाएगा ही, हमारे युवा टैलेंट को भी अपनी प्रतिभा दिखाने का एक प्लेटफॉर्म देगा। साथियों, आज दुनिया भारत को एक आशा की दृष्टि से, एक विश्वस्त की दृष्टि से देखती है, क्योंकि भारत का जन भी युवा है और भारत का मन भी युवा है। भारत अपने सामर्थ्य से भी युवा है। भारत अपने सपनों से भी युवा है। भारत अपने चिंतन से भी युवा है। भारत अपनी चेतना से भी युवा है। भारत युवा है क्योंकि भारत की दृष्टि ने हमेशा आधुनिकता को स्वीकार किया है। भारत के दर्शन ने परिवर्तन को अंगीकार किया है। भारत तो वो है जिसकी प्राचीनता में भी नवीनता है।
हमारे हजारों साल पुराने वेदों ने कहा है, अपि यथा युवानो मत्सथा नो विश्वम जगत अभिपित्पे मनीषा। यानी ये युवा ही है जो विश्व में सुख से सुरक्षा तक का संचार करते हैं। युवा ही हमारे भारत के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए सुख और सुरक्षा के रास्ते अवश्य बनाएंगे। इसलिए भारत में जन जन से जग तक, जन से जग तक योग की यात्रा हो, रिवॉल्यूशन हो या इवोल्यूशन, राष्ट्र सेवा की हो या समर्पण की, बात परिवर्तन की हो या पराक्रम की, राह सहयोग की हो या सुधार की, बात जड़ों से जुड़ने की हो या जग में विस्तार की, ऐसी कोई राह नहीं जिसमें हमारे देश के युवा ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा न लिया हो। अगर कभी भारत की चेतना विभाजित होती, ऐसे समय शंकर जैसा कोई युवा आदि शंकराचार्य बनकर देश को एकता के सूत्र में पिरो देता है। जब भारत को अन्याय और अत्याचार से लड़ने की जरूरत होती है तो गुरु गोविंद सिंह जी के बेटे युवाओं का बलिदान आज भी रास्ता दिखाता है। जब भारत को आजादी के लिए क्रांति की जरूरत होती है तो सरदार भगत सिंह से लेकर चंद्रशेखर आजाद और नेताजी सुभाष तक कितने ही युवा देश के लिए अपना सब कुछ अर्पण कर देते हैं। जब भारत को आध्यात्म की, सृजन की शक्ति की जरूरत होती है तो श्री अरविंदो से लेकर सुब्रमण्यम भारती से साक्षात्कार होता है। और जब भारत को अपना खोया हुआ स्वाभिमान फिर से पाने की, अपने गौरव को दुनिया में फिर से प्रतिष्ठित करने के आधार अधीरता होती है तो स्वामी विवेकानंद जैसा एक युवा भारत के ज्ञान से, सनातन आह्वान से दुनिया के मानस को जागृत कर देता है। साथियों, विश्व ने इस बात को माना है कि आज भारत के पास दो असीम शक्तियां हैं, एक डेमोग्राफी और दूसरी डेमोक्रेसी। जिस देश के पास जितनी युवा जनसंख्या है उसके सामर्थ्य को उतना ही बड़ा माना जाता है, उसकी संभावनाओं को उतना ही व्यापक माना जाता है। लेकिन भारत के युवाओं के पास डेमोग्राफिक डिविडेंड के साथ साथ लोकतांत्रिक मूल्य भी है, उनका डेमोक्रेटिक डिविडेंड भी अतुलनीय है। भारत अपने युवाओं को डेमोग्राफिक डिविडेंड के साथ साथ डेवलपमेंट ड्राइवर भी मानता है। आज भारत का युवा हमारे डेवलपमेंट के साथ साथ हमारी डेमोक्रेटिक वैल्यूज को भी लीड कर रहा है। आप देखिए, आज भारत के युवाओं में अगर टेक्नोलॉजी का चार्म है तो लोकतंत्र की चेतना भी है। आज भारत के युवा में अगर श्रम का सामर्थ्य है तो भविष्य की स्पष्टता भी है। इसलिए
भारत आज जो कहता है, दुनिया उसे आने वाले कल की आवाज मानती है। आज भारत जो सपने देखता है, जो संकल्प लेता है, उसमें भारत के साथ साथ विश्व का भविष्य दिखाई देता है। और भारत के इस भविष्य का, दुनिया के भविष्य का निर्माण आज हो रहा है। ये जिम्मेदारी, ये सौभाग्य आप जैसे करोड़ों करोड़ों देश के नौजवानों को मिला है। वर्ष 2022 का ये साल आपके लिए, भारत की युवा पीढ़ी के लिए बहुत अहम है। आज हम 25वां नेशनल यूथ फेस्टिवल मना रहे हैं। ये नेताजी सुभाष बाबू का 125वीं जन्म जयंती का वर्ष भी है। और 25 साल बाद देश आजादी के 100 वर्ष भी मनाएगा। यानी 25 का ये संयोग निश्चित रूप से भारत की भव्य दिव्य तस्वीर बनाने का योग भी है। आजादी के समय जो युवा पीढ़ी थी, उसने देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने में एक पल नहीं गवाया था। बट टुडेज यूथ हैज टू लिव फॉर द कंट्री एंड fulfill the dreams of our freedom fighters. महर्षि अरविंदो ने कहा था, a brave, frank, clean-hearted, courageous and aspiring youth is the only foundation on which the future nation can be built. उनकी ये बात आज 21वीं सदी के भारत के युवाओं के लिए जीवन मंत्र की तरह है। आज हम एक राष्ट्र के रूप में दुनिया के सबसे बड़ा युवा देश के रूप में हम एक पड़ाव पर हैं। ये भारत के लिए नए सपनों, नए संकल्पों का पड़ाव है। ऐसे में भारत के युवाओं का सामर्थ्य भारत को नई ऊंचाई पर ले जाएगा। साथियों, श्री अरविंदो युवाओं के लिए कहा करते थे, इट इज द यंग हु मस्ट बी द बिल्डर ऑफ द न्यू वर्ल्ड। रिवॉल्यूशन और इवोल्यूशन के इर्द गिर्द ही उन्होंने अपने जिस दर्शन को रखा था, वो युवाओं की भी असली पहचान है। यही दो गुण एक वाइब्रेंट नेशन की भी बड़ी ताकत होते हैं। युवाओं में वो क्षमता होती है, वो सामर्थ्य होता है कि वो पुरानी रूढ़ियों का बोझ लेकर नहीं चलता, वो उन्हें झटकना जानता है। यही हुआ खुद को, समाज को नई चुनौतियां, नई डिमांड के हिसाब से इवॉल्व कर सकता है, नए सृजन कर सकता है। और आज हमें देश में यही होते देख रहे हैं। अब भारत का युवा इवोल्यूशन पर सबसे अधिक फोकस कर रहा है। आज डिसरप्शन हो रहा है, लेकिन डिसरप्शन डेवलपमेंट के लिए हो रहा है। आज भारत का युवा इनोवेशन कर रहा है, समस्याओं के समाधान के लिए एकजुट हो रहा है। फ्रेंड्स, today's youth
has a can-do spirit, which is a source of inspiration for every generation. ये भारत की ही ताकत है कि आज भारत डिजिटल पेमेंट के मामले में दुनिया में इतना आगे निकल गया है। आज भारत का युवा ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी के कोड लिख रहा है। पूरी दुनिया के यूनिकॉर्न इकोसिस्टम में भारतीय युवाओं का जलवा है। भारत के पास आज 50,000 से अधिक स्टार्टअप्स का मजबूत इकोसिस्टम है। इसमें से 10,000 से अधिक स्टार्टअप्स तो कोरोना की चुनौतियों के बीच बीते 6-7 महीनों में बने हैं। यही भारत के युवाओं की ताकत है, जिसके दम पर हमारा देश स्टार्टअप के गोल्डन एज में प्रवेश कर रहा है। साथियों, नए भारत का यही मंत्र है, कॉम्पीट एंड कॉन्कर, यानी जुट जाओ और जीतो, जुटो और जंग जीतो। पैरालंपिक्स में भारत ने जितने मेडल जीते उतने भारत ने अब तक के इतिहास में नहीं जीते थे। ओलंपिक में भी हमारा प्रदर्शन श्रेष्ठ रहा, क्योंकि हमारे युवाओं में जीत का विश्वास पैदा हुआ। हमारे कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम की सफलता में तो युवाओं की भूमिका एक अलग ही स्तर पर नजर आई है। हम देख रहे हैं कि इस तरह 15 से 18 वर्ष के युवा तेजी से खुद को वैक्सीन लगवा रहे हैं। इतने कम समय में 2 करोड़ से ज्यादा बच्चों का टीकाकरण हो चुका है। ये आज के किशोरों में जब कर्तव्य निष्ठा के दर्शन करता हूं तो देश के उज्जवल भविष्य के लिए मेरा विश्वास और दृढ़ हो जाता है। ये हमारे किशोर 15 से 18 साल की उम्र के बाल साथियों ने जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये पूरे कोरोना काल में भारत के युवाओं में दिखी है। साथियों, सरकार का प्रयास है कि युवाओं की इसी ताकत के लिए उन्हें स्पेस मिले, सरकार का दखल कम से कम हो। सरकार की कोशिश उन्हें सही माहौल देने का हो, संसाधन देने की हो, उनका सामर्थ्य बढ़े, इसकी व्यवस्था बनाने की है। डिजिटल इंडिया के माध्यम से सरकारी प्रक्रियाओं को सरल करना, हजारों कंप्लायंसेस के बोझ से मुक्ति, इसी भावना को बल देती है। मुद्रा, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, ऐसे अभियानों से युवाओं को बहुत मदद मिल रही है। स्किल इंडिया, अटल इनोवेशन मिशन और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति युवाओं के सामर्थ्य को बढ़ाने का ही प्रयास है। साथियों, हम जानते हैं कि बेटे बेटी एक समान है। इसी सोच के साथ सरकार ने बेटियों की बेहतरी के लिए शादी की उम्र को 21 साल करने का निर्णय लिया है। बेटियां भी अपना कैरियर बना पाएं, उन्हें ज्यादा समय मिले, इस दिशा में
ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। साथियों, आजादी के इस अमृत काल में अपने राष्ट्रीय संकल्पों की सिद्धि हमारे आज के एक्शन से तय होगी। ये एक्शन हर स्तर पर, हर सेक्टर के लिए बहुत जरूरी है। We work with a mission to promote vocal for local. Vocal for local. शॉपिंग करते समय आपकी चॉइस में किसी भारतीय के श्रम की, भारतीय मिट्टी की महक हो, इस बात को कभी मत भूलना। हर बार इसी तराजू पर चीजों को तोलना और कुछ भी खरीद करने के निर्णय से पहले इस तराजू से तोल करके देखें कि उसमें मेरे देश के मजदूर के पसीने की महक है कि नहीं है। उसमें श्री अरविंदो, श्री विवेकानंद ऐसे महापुरुषों ने जिस मिट्टी को मां के समान माना, उस भारत मां की मिट्टी की महक है कि नहीं। वोकल फॉर लोकल हमारी बहुत समस्याओं का समाधान आत्मनिर्भरता में है। हमारे देश में बनी हुई चीजों को खरीदने में है। रोजगार भी उसी से पैदा होने वाला है। अर्थव्यवस्था भी उसी से तेज गति से बढ़ने वाली है। और देश के गरीब से गरीब को सम्मान भी उसी से प्राप्त होने वाला है। और इसलिए वोकल फॉर लोकल मेरा देश का नौजवान उसे अपना जीवन मंत्र बना ले। तो आप कल्पना कर सकते हैं आजादी के 100 साल कैसे भव्य होंगे, कैसे दिव्य होंगे, सामर्थ्य से भरे हुए होंगे, संकल्पों की सिद्धि के पल होंगे। साथियों, हर बार एक विषय में अवश्य कहता हूं, दोबारा कहना चाहूंगा और आप लोगों के बीच कहने का मन इसलिए करता है क्योंकि आप लोगों ने इसमें लीडरशिप दी है, और वो है स्वच्छता। स्वच्छता को भी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाने में आप सभी नौजवानों का बहुत बड़ा योगदान है। आजादी की लड़ाई में हमारे ऐसे अनेक सेनानी रहे हैं जिनके योगदान को वो पहचान नहीं मिल पाई जिसके वो हकदार थे। उनकी त्याग, तपस्या, बलिदान कोई कमी नहीं थी, लेकिन उन्हें वो हक नहीं मिला। ऐसे व्यक्तियों के बारे में हमारे युवा जितना ज्यादा लिखेंगे, रिसर्च करेंगे, इतिहास के उन पन्नों को खोज खोज करके निकालेंगे, उतना ही देश की आने वाली पीढ़ियों में जागरूकता बढ़ेगी। हमारे स्वातंत्र्य संग्राम का इतिहास अधिक तंदुरुस्त होगा, अधिक सशक्त होगा, अधिक प्रेरक होगा। साथियों, पुडुचेरी एक भारत श्रेष्ठ भारत का खूबसूरत उदाहरण है। भिन्न भिन्न क्षेत्रों से अलग अलग धाराएं आकर इस स्थान को एकीकृत पहचान देती है। यहां जो संवाद होगा वो एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को और सुदृढ़ करेगा। आपके विचारों से कुछ नया भाव निकले और जो कुछ नई चीजें आप यहां से सीख कर जाएं, वो बरसों बरस तक राष्ट्र सेवा की प्रेरणा बनेगी। I have full faith in the National Youth Festival
and this will show the way to achieve our aspirations. साथियों, ये त्योहारों का भी समय है। अनगिनत त्योहार, हिंदुस्तान के हर कोने में त्योहार, कहीं मकर संक्रांति, कहीं लोहड़ी, कहीं पोंगल, कहीं उत्तरायण, कहीं बिहू, ऐसे सभी त्योहारों की आप सबको अब अग्रिम शुभकामनाएं। कोरोना से पूरी सावधानी और सतर्कता के साथ हमें त्योहार मनाने हैं। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आपको सदैव भारत की युवा शक्ति में गहरा विश्वास रहा है। आपने हरदम कहा है कि भारत की सर्वप्रथम शक्ति हमारा विशाल युवा समुदाय है। आज आप वर्चुअली हमारे साथ बने हुए हैं। ये भारत के सभी युवा नागरिकों के लिए हर्षोल्लास का विषय है। निसंदेह आप भारत की युवा पीढ़ी के लिए नंबर 1 इंस्पिरेशन, नंबर 1 रोल मॉडल हैं सर। सर, स्वागत है आपका राष्ट्रीय युवा महोत्सव के इस उद्घाटन समारोह में। और अब मैं अनुरोध करना चाहूंगी माननीय श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी से, यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड यूनियन मिनिस्टर फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, कि वह हमारे प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करते हुए उनके स्वागत में कुछ शब्द कहें और 25वीं राष्ट्रीय युवा महोत्सव में हमारे दर्शकों को संबोधित करें। श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी। युवा शक्ति से बदल रहा परिवेश, परिवेश बदलने से बदल रहा देश। नई चेतना का ये युवा महोत्सव नव निर्माण का दे रहा संदेश। भारत के यशस्वी और अति लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, पुदुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर आदरणीय डॉक्टर तमिलसाई जी, माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय रंगास्वामी जी, उपस्थित सभी वहां पर माननीय मंत्रीगण, मेरे साथ यहां पर उपस्थित युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री आदरणीय निशित प्रमाणिक जी, उपस्थित सेक्रेटरी यूथ अफेयर्स, चीफ सेक्रेटरी पुदुचेरी और उपस्थित सभी अधिकारीगण, देश भर के कोने कोने से जुड़े हुए मेरे करोड़ों प्रिय भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं करोड़ों युवाओं की ओर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आप सबके बीच में आने पर बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। सर, आपने कीमती समय निकालकर देश के युवाओं को अपना आशीर्वाद देने आए हैं। आज का दिन जहां एक और स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस भी है, पूरा देश इसको राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाता है। हम सब के लिए जहां एक और स्वामी विवेकानंद जी प्रेरणा स्रोत है, उनके जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, वहीं भारत की आवाज को बुलंद, भारत का संदेश उन्होंने दुनिया भर में दिया। और दुनिया भर में जहां एक और भारत की छवि को सुदृढ़ करने का काम किया, वहीं पर शिथिल पड़े हुए देशवासियों को जगाने का काम भी, और उनकी क्या जिम्मेदारियां, उसको काम भी किया। आज आपके नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है और मैं कह सकता हूं, जहां एक और भारत आपके नेतृत्व में दुनिया भर में अपना परचम लहरा रहा है, वहीं भारत के युवा भी आपके मार्गदर्शन में देश को नई दिशा देने के लिए तैयार है। ये विशेष वर्ष भी है क्योंकि हम आजादी के 75 वर्ष मना रहे हैं, आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। मैं देश के युवाओं से कहना चाहता हूं, लाखों युवाओं ने अपना बलिदान देकर
देश को आजादी दिलाई थी। आप अपना योगदान देकर 75वें वर्ष से 100वें वर्ष तक देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करें। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने COP26 में देश को, दुनिया को एक ऐसा नेतृत्व दिया जिसमें दुनिया एनवायरनमेंट के क्षेत्र में हो, एक नई दिशा देने का काम किया, प्रेरणा दी। और वहीं पर हम देश के अंदर भी देख सकते हैं, आज हमारे जो कुछ वक्ता हैं उसमें उनका भी काम एनवायरनमेंट के क्षेत्र में बहुत रहा, पद्मश्री से सम्मानित भी हैं। इसी तरह से प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि किसानों की आय दुगनी हो, तो उसी तरह से आचार्य देवव्रत जी हमारे गवर्नर हैं और पूरा जीवन उन्होंने नेचुरल फार्मिंग पर लगाया, वो भी आपको जानकारी देंगे। खिलाड़ियों के लिए प्रधानमंत्री जी के मन में और युवाओं के लिए एक विशेष स्थान है। जहां हमारे खिलाड़ियों ने टोक्यो ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स में बहुत मेडल जीते और देश का मान सम्मान बढ़ाया, वहीं प्रधानमंत्री जी का फिट इंडिया कैंपेन, फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज और खेलो इंडिया प्रोग्राम जैसे ने देश में खेलों को बढ़ावा दिया है। तो हमारे टोक्यो के स्टार ओलंपियंस और पैरालंपियंस भी आपको 2 दिन में बातचीत करेंगे। वहीं पर इतिहास की जानकारी हो, इस पर भी बहुत सारे बुद्धिजीवी अपने इतिहास की जानकारी को लेकर आप सबके बीच में आएंगे। जहां एक और माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्किल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया को बढ़ावा दिया है, करोड़ों युवाओं को स्किल देने का काम हो रहा है। वहीं पे स्टार्टअप्स के माध्यम से देश का नाम दुनिया भर में पहुंच रहा है। हम दुनिया के पहले 3 स्टार्टअप नेशंस में आकर खड़े हुए, तो प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच का ही ये परिणाम है। ऐसे ही स्टार्टअप जो यूनिकॉर्न्स बने, उनके जुड़े हुए युवा भी आप सबको संबोधित करेंगे, अपने विचार रखेंगे। सांस्कृतिक विरासत को बचाने का काम, आगे बढ़ाने का काम आदरणीय मोदी जी आपने किया है। चाहे केदारनाथ की बात करूं, सोमनाथ की बात करूं, काशी विश्वनाथ धाम की बात करूं, अयोध्या धाम की बात करूं, आपने विरासत को बचाया भी, आगे बढ़ाने का काम भी किया, विकास को भी नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया। मेरा अपने आपके सामने सब युवाओं से यही अनुरोध रहेगा कि जहां एक और माननीय प्रधानमंत्री जी देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम कर रहे हैं, हम सबका भी ये प्रयास होना चाहिए कि हम किसी एक क्षेत्र को ऐसा चुने जहां पर हम बदलाव लाना चाहते हैं, बदलाव देखना चाहते हैं और उस बदलाव का कारण भी बने। मुझे पूर्ण विश्वास है आप कोई एक क्षेत्र ऐसा चुनेंगे जहां अगले 25-30 वर्षों में अपने देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का जीवन हम सबके लिए एक ऐसा प्रेरणा देता है कि वो कैसे देश को आगे ले जाने का काम पूरा दिन रात एक करके मेहनत करके करते हैं। इसी तरह से श्री अरबिंदो जी की 150वीं जन्म जयंती भी है। उस समय हम उस महान पोएट, पैट्रियट और फिलोसोफर को, एक महर्षि को, एक योगा गुरु को भी याद करें। उनके जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो स्वामी विवेकानंद जी और श्री अरबिंदो जी के जीवन से सीखते हुए हम सब भारत को आगे बढ़ाने का काम करें। मैं आप सबकी ओर से एक बार फिर माननीय प्रधानमंत्री जी का आज के कार्यक्रम में आने पर बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपने चाहा था कि पुदुचेरी में आप व्यक्तिगत रूप से आएंगे, आपने मंजूरी भी दी थी, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल के चलते हमें रद्द करना पड़ा। डिजिटली आज आप करोड़ों युवाओं तक अपना संदेश पहुंचाएंगे, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार एक बार सभी युवाओं की ओर से प्रकट करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भारत, जय हिंद। थैंक यू ऑनरेबल मिनिस्टर श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी। आपका कहा गया हर शब्द हम सबको आगे ही आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, ताकत देता है, हिम्मत देता है। The people of Puducherry are delighted to host the 25th edition of the National Youth Festival. We have with us the Dynamic Minister of Puducherry. I would now like to request the Honorable Chief Minister of Puducherry, Shri N. Rangasamy, to please share his thoughts with us on this occasion of significant futuristic importance. Please, sir. அனைவருக்கும் வணக்கம். Respected Honorable Prime Minister of India. Tirukural defines a good government or good governance as this: ஏற்றலும் ஈட்டலும் காத்தலும் காத்த வகுத்தலும் வல்லதரசு. A good government is the one which creates more and more sources of resources, channeling the due share to the administration, saving the same and using
it for the people for good reasons. This is one of the definition given by Deiva Pulavar Thiruvalluvar for good governance and good government. Honorable Prime Minister of India, who stands as the icon of good governance as defined by Thiruvalluvar. Honorable Minister for Youth Affairs and Sports, Shri Anurag Singh Thakurji, and Honorable of State for Youth Affairs and Sports Ministers, Honorable Lieutenant Governor of Puducherry, Honorable Puducherry Education Minister, my loving youth of India, swarming with energy and zeal, the dynamic tools with which Swami Vivekananda preferred to transform the entire world. My dear brothers and sisters who are watching, participating and blessing this glorious event of 25th National Youth Festival 2022. Puducherry is feeling proud to host such a promising event, and personally I feel that I am honored to be a part of this great Young India building event. My dear Young India, I desire to meet you all in person on this 25th National Youth Festival 2022. Like that, I hope you would have also been eager to enjoy the beauty and hospitality of Puducherry. The third wave of the accelerating COVID-19 has blocked our desires. You each need to build and save the future of this nation. Hence, it is our duty to protect you from this COVID-19, which is why we are conducting this event in virtual mode. I am glad to see all of you through this virtual mode. I am happy to convey my best wishes to all of you, my dear friends. There are many ways through which one can contribute to his country. Wealth, science, commerce, etc. are some examples. But please remember, my dear friends, education without character, wealth without charity, commerce without morality, science without humanity are not only useless but also dangerous. These character, charity, morality, humanity, probity are nothing but the important values for an ideal Indian youth. That is a Shaktitva, Valimayana Ilangar, will have these characteristics. Only for this, we are having the training or Chakcham. This is the theme of this 25th National Youth Festival 2022, that is Chakcham Yuva, Shakti Yuva. Tiramaiயான இளைஞர், உறுதியான இளைஞர். Many great men who revolutionized their society are youth icons. People will misquote that they had passed away at a young age. But I will say that they have completed their life message very fast, and we only have a youthful portrayal of them. Adi Sangaracha is like that. Sangaracha is like that. Mahahavi Subramania Bharatiar is like that. Swami Vivekananda is also like that. Swami Vivekananda's birthday, that is this day, 12th January, is being celebrated as the National Youth Day. Swami Vivekananda defined what is life and what is death. He says, strength is life, weakness is death. Expansion is life, contraction is death. Love is life,
at his death. Swami Vivekananda was not a recluse. He was so practical and so dynamic, and he points out the practical aspect of life also. In a day when you don't come across any problems, then you can be sure that you are traveling in a wrong path. I like to stress that challenges are nothing but opportunities, and they are natural. Puducherry had kept many great leaders as its dearest during the freedom struggle. Great leaders like Maharishi Sri Aurobindo, Mahakavi Bharati, V.V.S. Iyer lived in the beauty of Puducherry, escaping the dreadful clutches of the British. The great Tamil, who stunned the British by operating the Swadeshi Steam Navigation Company, Kapulottiya Tamilan Sri V.O. Sidambaram Pillai came to Pondicherry. He stayed here for many days. He met Sri Aurobindo and described him as Raja Rishi. He also met Mahakavi Subramanya Bharati. He had registered plenty of other facts regarding this in his book Nankanda Bharati. Puducherry is popularly known as Jnana Bhumi or Veda Bhumi, a land of spiritualism, siddhas and sages. Sri Aurobindo lived here as a Maharishi. Bharati had wrote many spiritualistic poems here. Above all, Puducherry had turned the French Madame, the mother of Bharat, the icon of Sri Aurobindo Ashram. In this holiest place of Puducherry, we are honored that our Honorable Prime Minister is inaugurating the Kamaraj Mani Mandapam. Perunthalavar Kamaraj is the icon of political probity. He was the first person to introduce free noon meal scheme for school students. But in this case, our Puducherry will be dearer to Perunthalavar Kamaraj, since we having implemented free noon meal scheme for school students of Puducherry in 1920 itself. My dear friends, the MSME are being encouraged throughout the country. As I said earlier, our Honorable Prime Minister takes his guidance from Thirukural, so we are heading towards the status of superpower. Puducherry is grateful to our Honorable Prime Minister, who is giving to inaugurate the Pondicherry MSME Technology Center. Population general is mere head count and liability. But when it is turned into skilled workforce or a force which can contribute to the country, is that mere head count transforms in demographic dividend. That is what happening after the implementation of Atma Nirbhar Bharat. And the same will happen in our Puducherry also. My dear friends, may this youth festival refresh you and take you to new ideas and creations. You must become the role models for this world. It is my desire that you should become the pride and the dignity of this nation, and that this world should see you at its peak. I hope you will do this. I once again thank you all for your active participation
for transformations. I extend my humble thanks to our Honorable Prime Minister for bestowing his consideration initiatives for the welfare of the people of Puducherry. I thank our Honorable Minister for Youth Affairs and Sports, Shri Anurag Singh Thakur, for the concerted efforts that had enabled Puducherry to contribute for the nation. Thank you one and all. Thank you very much. Nandri Vanakkam. धन्यवाद श्री रंगस्वामी जी. मक्कल मुदलवर, द पीपल्स चीफ मिनिस्टर. और अब मैं विनम्र निवेदन करूंगी माननीय प्रधानमंत्री जी से कि आज के इस युवा महोत्सव के शुभ अवसर पर बटन दबाकर वे पेरुम तलैवर कामराजर मणिमंडपम का उद्घाटन करें. साथ ही में मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से सविनय निवेदन करूंगी कि वे एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर का अपने कर कमलों द्वारा बटन दबाकर शुभ उद्घाटन करें. प्लीज सर. India is contributing towards a